आज श्री विजयपुरम में आयोजित इस कॉन्क्लेव का मकसद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना है। फूड प्रोसेसिंग के लिए जो सप्लाई चेन होती है, वैल्यू एडिशन सप्लाई चेन, ये शुरू ही होती है फार्म से। फार्म प्रोसेसिंग टिल मार्केट, ये कंप्लीट वैल्यू चेन वैल्यू चेन की जो सप्लाई चेन होती है, वैल्यू एडिशन की सप्लाई चेन होती है, उसे सपोर्ट हमारी मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इस सप्लाई चेन वैल्यू चेन से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, विल हैव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू द रूरल फार्मर्स या रूरल यूथ्स। प्रोसेसिंग की कैपेसिटी और प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी जो बढ़ानी है, जो आज की तारीख में बहुत कम है, उसे बढ़ाने का हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस डिफरेंट एक्टिविटीज़ को दिया जाता है, हमारे मिनिस्ट्री द्वारा उसका संचालन किया जाता है। और लास्ट का ऑब्जेक्टिव है इनकरेज द प्रोसेसिंग क्लस्टर। जैसे अंडमान में प्रोसेसिंग क्लस्टर में हम फिशरीज का एक क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक स्पाइसेस का एक क्लस्टर कर सकते हैं, कोकोनट प्रोडक्ट्स का, कोकोनट वैल्यू एडिशन का एक क्लस्टर डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्लस्टर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी मिनिस्ट्री की कुछ स्कीम्स है। मैं एक के बाद एक अपनी स्कीम्स आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली हमारे पास ये 3 मेजर स्कीम हैं, जिसको हम, पहली स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्कीम। ये अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत डिफरेंट स्कीम्स है, मैं फर्दर स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है, आप लोगों के सबसे ज़्यादा काम की स्कीम है, जिसको हम PMFME कहते हैं। ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको कैसे मेन स्ट्रीम में प्रोसेसिंग में लाया जा सके, इसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो एक्टिविटीज़ कवर होती है वो इस PMFME स्कीम में होती है। दास साहब ने भी इसके बारे में मॉर्निंग में बताया था। हर स्टेट में एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ही के थ्रू हम लोग इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, लार्ज एंटिटीज़ होती है, उनके लिए इस स्कीम का ये होता है। इसका यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंस नहीं, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। लेकिन पहली 2 स्कीम्स है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एंड प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ये दोनों स्कीम्स के बारे में मैं थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को बताऊँगा। पहली स्कीम जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, जिसको हम यूनिट स्कीम भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सभी प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ है, जैसे मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग करनी हो, या मिल्क मीट फिश प्रोसेसिंग करनी हो, या रेडी टू ईट रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स आपको प्रोसेस करने हो, या पल्सेस प्रोसेस करना, ऑयल सीड मिलिंग करनी हो, या फ्रूट्स एंड हनी बेस्ड वाइन या हनी प्रोसेसिंग करना हो, नेचुरल फूड फ्लेवर्स या स्पाइसेस प्रोसेसिंग करनी हो, या जागरी, शुगर केन से जो जागरी बनती है उसकी प्रोसेसिंग करने हो, तो उसके लिए इसके तहत जो एक्टिविटी, जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो कवर होती है वो जैसे सॉर्टिंग, ग्रेडिंग है, ब्लांचिंग है, ड्राइंग है, पास्चराइजेशन है, कैनिंग है, पैकेजिंग है, पिकलिंग, फर्मेंटेशन, फ्रीजिंग, क्रशिंग, एक्सट्रैक्शन, जो भी प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ है वो सभी एक्टिविटीज़ इस स्कीम में कवर होती है। इसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी जो होती है, कम से कम 20% आपको बैंक से टर्म लोन लेना होता है, और मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 3 करोड़ की होनी चाहिए है इसके लिए, और 60% फंड जो इसमें एलोकेट किया जाता है वो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और मेगा फूड पार्क के तहत जो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगती है उसके लिए, एंड 40% हम लोग आउटसाइड द मेगा फूड, जो भी लोग अपना यूनिट सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए हमने रखा हुआ है। इसमें टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आती है उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी को हाउस करने के लिए जो टेक्निकल सिविल वर्क होता है, ये दोनों की जो कॉस्ट होती है उसका 35% मैक्सिमम 5 करोड़ तक इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस हम देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार ये आइलैंड की इसमें आता है, तो इसमें हम 35 की जगह हम 50% देते हैं। जैसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हो या SC/ST कम्युनिटीज़ के एंटरप्रेन्योर्स हो, उनको हम 35 की जगह 50% देते हैं, मैक्सिमम 5 करोड़ तक इस पर्टिकुलर स्कीम में देते हैं। अभी ये स्कीम ओपन है, 31 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। अगर किसी को इस स्कीम के तहत अप्लाई करना हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद की जो स्कीम है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है। अगर मैं अंडमान की बात करूँ तो यहाँ पर मिल्क का उतना नहीं है, लेकिन फिश प्रोसेसिंग का जो है, फिश प्रोसेसिंग में राइट फ्रॉम आपके कैचमेंट एरियाज़ है, आपका जो फिश कैच जहाँ पे होती है वहाँ से लेके तो मार्केट तक को कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, आप में से कोई एक ग्रुप इस पर्टिकुलर कोल्ड चेन, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के स्कीम में अगर फ़ायदा लेना चाहता है, तो आपका ग्रुप कंपनी है कुछ, जहाँ से फ़िश कलेक्शन होता है, जहाँ से फ़िश आप कलेक्ट करते हो, वहाँ पर आप छोटा सा अपना ग्रेडिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर लगा सकते हैं, जिसका टेम्परेचर होगा -0 to 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि -0 to 4 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर या फ्रोजन टेम्परेचर आपको फिश कैचमेंट एरिया से, फिश कैचिंग से लेके तो मार्केट तक का वो मेंटेन करना होता है। तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। तो से फॉर एग्जांपल आपने छोटे से कलेक्शन सेंटर आपके क्लस्टर्स में लगाए, जहाँ से फ़िश कलेक्शन होती है, जैसे आपने फिशरमैन से आपने फ़िश कलेक्ट करनी है या सी फूड जो भी है उसको कलेक्ट करना है, उसको वहाँ पे ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके, वहाँ पे चिलिंग करके, वहाँ पे कलेक्शन सेंटर में छोटा सा आपने चिल्लर बना दिया, उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसको सेम टेम्परेचर में आपने प्रोसेसिंग यूनिट में लाया, प्रोसेसिंग यूनिट में उसको फर्दर प्रोसेसिंग किया आपने, उसके जो भी वैल्यू एडिशन किया, जो भी वैल्यू एडिट किया, फिर उसको फ्रोज़न कर दिया। फ्रोज़न करने के बाद उसको आपने पैक करके, फ्रोज़न पैक आपको रेफर व्हीकल में डाल के मार्केट एंड तक लेके जाना है। तो मार्केट एंड तक लेके जाने के लिए जो रेफर व्हीकल लगती है, जो कोल्ड स्टोरेजेस लगते हैं, आपका जो कलेक्शन सेंटर्स, ये कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कवर किया जाता है, जिसके लिए हम लोग 10 करोड़ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें देते हैं कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। मैक्सिमम 35%, अंडमान के लिए 50%, मैक्सिमम 10 करोड़ तक इसमें देते हैं। सभी कंपोनेंट्स इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हब कवर होता है। फार्म लेवल पे आपको फ्रोजन डिप कोल्ड स्टोरेज लगाना है, IQF लगाना है, ग्रेडिंग पैकेजिंग लाइन लगानी है, स्टेजिंग कोल्ड स्टोरेज वहाँ लगाना है, रेफर व्हीकल उसमें ख़रीदना है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कवर होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें इरिडेशन फैसिलिटीज़ का है। स्टैंड अलोन इरिडेशन फैसिलिटी मैडम सरकार मैडम मॉर्निंग में बोल रही थी, जैसे कल्याणी मैडम ने भी बोला था कि यहाँ पे इरिडेशन फैसिलिटी, अभी मिनिस्ट्री ने इरिडेशन फैसिलिटीज़ को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हम दे रहे हैं, इसमें 10 करोड़ तक देते हैं। होता क्या है कि इरिडेशन फैसिलिटीज़ में आपके जो भी मरीन प्रोडक्ट्स है, मरीन प्रोडक्ट्स को रेडिएशन टेक्नोलॉजी के थ्रू लेके जाते हैं, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने से लेके तो 1.5 साल तक बढ़ती है। तो अगर उसको आप प्रॉपर स्टोरेज, चिल्ड कोल्ड स्टोरेज कंडीशन में अगर उस इरिडेशन फैसिलिटी के थ्रू उस प्रोडक्ट को, तो नॉर्मल इसमें जैसे 3 से 4 महीना उसकी शेल्फ लाइफ रहती है, तो ये 1.5 साल तक, 8 महीने से 1.5 साल तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो आपके प्रोडक्ट के लिए अंडमान से एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ जाता है। आप अंडमान से वियतनाम और बाकी की कंट्रीज़ में भी दूसरी जगह पे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके अंडमान के प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में अगर लेके जाना है तो उसके लिए इरिडेशन फैसिलिटी सबसे अच्छी फैसिलिटी मानी जाती है। उसके लिए हम लोग 10 करोड़ तक पर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। उसके बाद में एक स्कीम है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर से, ये मिनी फूड पार्क की तरह काम करती है। इसका ज़्यादा रिलेवेंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में हमने एक्सक्लूसिवली जिस पर्टिकुलर क्लस्टर में टमाटो, अनियन और पोटैटो या फिर दूसरी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उस पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी एरिया में पोटैटो ज़्यादा हो रही है या अनियन ज़्यादा हो रही है, तो अनियन से प्रोड्यूस होने वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, पोटैटो से प्रोड्यूस होने वाले वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसका एक क्लस्टर बना के उसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसके लिए हम लोग इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। एक्सक्लूसिवली फॉर ऑपरेशन ग्रीन्स में हमने मरीन अपना श्रिम्प प्रोसेसिंग के लिए भी इसको ओपन रखा है, जिसमें हम लोग इसमें 15 करोड़ तक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए देते हैं। और स्टैंड अलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगाना है किसी को तो उसमें 10 करोड़ तक देते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस की बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर मान लीजिए आपको अपने क्षेत्र में अंडमान में कहीं पे भी फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का सेटअप करना है, फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का सेटअप करना मतलब आपके लेबॉर्ट्री को अगर दूसरे कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स आपके लेबॉर्ट्री में इवैल्यूएट करने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो आपके पास में NABL एक्रेडिटेशन होना आवश्यक है।
अब इनेबल एग्रीडेशन अगर होना है तो उसके हिसाब से आपके लेबॉर्ट्री में उतने इक्विपमेंट होनी चाहिए, आपके लेबॉर्ट्री में उतना मैन पावर होना चाहिए, क्वालिफाइड टेक्नीशियंस होनी चाहिए। तो उसके लिए मिनिस्ट्री फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, क्योंकि लैब के जो इक्विपमेंट है, इनेबल एक्रेडिटेशन अगर आप करते हो तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स है, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट, HPLC, LC-MS जैसे बड़े इक्विपमेंट जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू का एनालिसिस होता है, एंटीबायोटिक रेसिड्यू का एनालिसिस होता है, जो कि मरीन प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक रेसिड्यू का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में कई बार हमने देखे हैं कि एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट फेल हो जाते हैं ग्लोबल। तो वो ऐसा कंसाइनमेंट फेल ना हो, इसलिए अपने लैंड पर ही उसका प्रॉपर एनालिसिस अपने प्रोडक्ट का हो जाना चाहिए। उसके लिए जो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टोटल प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट होती है उसका हम नॉर्मल जनरल एरिया में 50% देते हैं प्राइवेट एंटिटी को, मगर अंडमान या डिफ़िकल्ट एरियाज़ के जो लोग हैं अगर वो लैब सेटअप करना चाहे तो हम टोटल इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होती है उसका 70% हम लोग उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, प्लस उन इक्विपमेंट को हाउस करने के लिए, उनको रखने के लिए जो प्लेटफॉर्म सिविल स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए 15 लाख तक सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है कि लेबॉर्ट्रीज़ के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ अगर इसको लगानी चाहती है तो उसके लिए हम लोग 100% कॉस्ट यहाँ पर देते हैं। अगर मान लो अंडमान की कोई अच्छी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है या यहाँ की कोई कॉलेजेस है, फूड टेक्निकल कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, सो वो लोग लेबॉर्ट्री सेटअप कर सके जिसका अंडमान के जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ के जो फूड प्रोसेसर्स हैं, वो वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हैं। ये एक सबसे बेस्ट स्कीम है, दास साहब ने भी एक्सप्लेन किया था, PMFME स्कीम। ये बनी ही छोटे छोटे फूड प्रोसेसर्स के लिए जो अपने छोटे पिकल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या ड्राइड फिश का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या छोटे मीडियम साइज़ के या छोटे साइज़ के अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कीम सबसे बेस्ट है, PMFME स्कीम्स। इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स को हम लोग 35% 10 लाख तक देते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो बैंक में सबमिट करना होता है। बैंक ने अगर आपको टर्म लोन सैंक्शन कर दिया है तो अगर मान लीजिए से फॉर एग्जांपल बैंक ने आपको 20 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया आपको छोटा सा यूनिट्स एस्टेब्लिश करने के लिए। अब जब आपको बैंक ने टर्म लोन सैंक्शन कर दिया है तब वो प्रपोज़ल ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो प्रपोज़ल हमारे पास में आता है। हम लोग इवेल्यूएट करके उसमें से अगर आपका प्रपोज़ल 10 लाख के लिए एलिजिबल तो 10 लाख हम आपकी बैंक को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, वो शेयर और हमारा शेयर मिलके 10 लाख रुपया बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको 20 लाख के अगेंस्ट में सिर्फ 10 लाख ही रिपे करना है और इंटरेस्ट भी 10 ही लाख के ऊपर देना है। ग्रुप है, अगर फार्मर्स ग्रुप है या फिर आपके एक आधा फार्मर्स कंपनी आपने बनाई है, FPCs बनाई हैं, तो उसके लिए 40,000 तक का तो हम सीड कैपिटल देते हैं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, प्लस आपको ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग के लिए भी सपोर्ट मिलता है। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है तो उसके लिए भी 35% जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मान लीजिए 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 5 करोड़ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसका 35% हम आपको दे देंगे। फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPCs बना के अगर आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें अगर आप मान लीजिए आपके फिशरमैन हैं, उनका एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के सारे फिशरमैन का एक ग्रुप बना के आपने एक कंपनी बना ली, आपने कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर बना लिया। फिशरमैन मान लीजिए 50 फिशरमैन हैं तो वो अपनी फ़िश लेके वहाँ पे आएंगे, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर में उसका ड्राइंग, फिशिंग, वैल्यू एडिशन, जो भी पैकेजिंग जो भी होगा वो कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर में होगा। आप इंडिविजुअली उसको एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक मार्केट में लेके जा सकते हैं, या फिर आपके टोटल सारे फार्मर्स का मिलके एक ब्रांड नेम बना के उस ब्रांड नेम के तहत आप उस प्रोडक्ट को मेन लैंड में या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए अगर ब्रांडिंग मार्केटिंग की भी आवश्यकता होती है कि छोटे जगह पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके लिए भी सपोर्ट दिया जाता है। मान लीजिए आपको अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे या फिर जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आपको बेचना है तो उसके लिए आपको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए जो पैसा चाहिए, जो उसके लिए भी इस स्कीम में प्रावधान रखा गया है। इस स्कीम से उसकी मदद ली जा सकती है। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि दास साहब है यहाँ पर डायरेक्टर
इंडस्ट्रीज से। अंडमान के लिए दे आर द नोडल एजेंसी। PMFME स्कीम्स के लिए जो भी फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, दास साहब अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, उनसे आप ले सकते हैं। देन मैं कहना चाहूँगा आप सबको कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट अपने इंडियन फूड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेना होता है वो हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया जैसी बड़ी इवेंट के थ्रू हम करते हैं, जिससे आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, जब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए हम लोग स्पेशल पेविलियन बनाते हैं दिल्ली के इस इवेंट में, जिससे कि आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में साथ हो। इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज से जो बायर्स आते हैं, जो सेलर्स आते हैं, जो बायर्स आते हैं वहाँ से, जो आके देखते हैं कि इंडिया में कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या प्रोडक्ट, तो उनको ग्लोबल मार्केट में ले जाने के लिए वो लोग हेल्प करते हैं। रिवर्स बाय सेल मीट हम लोग उसमें ये करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें जैसे भी टाइम मिलता है। इसमें करीबन इंटरनेशनल कंट्री लास्ट अभी जो 24 में जो हुई थी, सितंबर 24 में जो इवेंट हुई थी, उसमें करीबन 10 इंटरनेशनल कंट्री डेलीगेशंस आए थे। 110 चीफ CXOs जो लीडिंग कंपनीज इंडिया की है वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट। आज की तारीख में क्या होता है ना कि जो बड़ी कंपनी जैसे ITC, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज हैं, वो आजकल खुद बड़े यूनिट नहीं लगाते, उनके ऑल अक्रॉस द कंट्री उनके यूनिट्स लगते हैं। बहुत सी यूनिट्स तो उनकी खुद की होती है, लेकिन अभी उन्होंने एक नया मॉडल ये किया कि वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो फार्मर्स ग्रुप है, जो MSMEs है, जो यूनिट्स उनको बोलते हैं कि आप यूनिट लगाइए और ब्रिटानिया के लिए आप प्रोडक्ट बनाइए, ITC के लिए आप हमें प्रोडक्ट बना के दीजिएगा। तो इस तरह से भी बहुत से MOUs इस तरह के इवेंट्स में साइन होते हैं। प्लस एग्जिबिटर्स जो है करीबन मोर देन 1500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे एग्जिबिट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस वर्ल्ड फूड इंडिया की हमारा जो इवेंट है उसमें आप शामिल हुए। अभी 4th एडिशन आने वाला है जो कि 25 से 28 सितंबर 25 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। The tuna cluster project, first of all, we are talking about processing. Until and unless we get the fish at landing center, how do we process? Deep sea fishing. Tuna, you might have heard about tuna. Tuna is called as chicken of the sea. It is having very much demand in many countries and being exported from mainland. But Andaman ecosystem is a pure ecosystem. Andaman brand fish is not going in a brand, Andaman brand. No pollution, no heavy metals, no means fresh fish can be sent, but we don't have the sesame grade tuna preparation processing plant. If we are preparing sesame grade tuna preparation, then we can fetch more revenue. Ultimately, the fishermen, boat owners, everybody will get benefited. Whatever tuna is being caught in Andaman within 70 meters depth zone, deep sea tuna fishery resources they are not catching. As a scientist, earlier I was a scientist, I worked on tuna. Whatever tuna migrates from deep sea to shallow waters, they spend for some time for feeding and breeding. Those fishes we are catching because we don't have tuna longliners in Andaman Nicobar Islands. Under tuna cluster project, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana having very good component, they are encouraging the fishermen entrepreneurs to come forward to construct the boats under that scheme, to purchase the boats under scheme, and to propagate the technology of tuna long lining technology. I will tell you, I will shortly finish it off. So that is more important. First, catching the fish, we should have the technology. Until unless we don't have our boats, whatever catch is coming in landing centers, that is only hook and line shallow water samples. Deep sea potential, huge potential is available, but we are not unable to catch the deep sea tunas and allied resources. So I'll just give you a nutshell and
tell you about the tuna and how it is being harvested, how it has to be harvested. I'll give you brief about tuna. This is available in the coastline of India, coastline of this thing. Recent production of tuna in marine environment, 4.43 million tons. Inland freshwater reservoirs, canals, all fish of 13.11 million tons. Total production 17.54 million tons. Now you can see the export quantity exported in the form of frozen fish or chilled fish, whatever value addition what they are making, and they are sending it through processing plants. 17,35,286 metric tons was exported. Out of that, we got the revenue of 63,969 crores. That means fisheries is playing a very much crucial role in the economic development of the country. But I'm feeling very bad. The fishermen are not getting proper benefits. Their lives are as such. All the maritime states I've seen in Andaman, their lifestyles, their livelihood not being improved. I was discussing with Dogre sir. आप लोग को बताना चाहता है फिशरमैन भाई लोग को, besides प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा scheme, one more scheme is there which is being implemented by Ministry of Food Processing Industries. आपको processing plant construct करना है, 50% सब्सिडी देने के लिए रेडी है. डायरेक्टली एक ग्रुप कंस्टिट्यूट होकर, जैसा डोगरे साहब ने पहले इसमें बताया था, आप लोग 50 लोग मिलके एक प्रोसेसिंग प्लांट आप लोग के लिए बनाना है तो 50% सब्सिडी विल बी गिवन बाय द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. एम आई राइट सर? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, डोंट डिपेंड ओनली ऑन प्रधानमंत्री संपदा मत्स्य संपदा. देयर आर अदर वेज एंड मीन्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसेसिंग प्लांट्स. You know, we know very well how many islands, how many coastline islands are 836 islands, so 31 are inhabited islands, 1912 kilometers of coastline. We have a huge coastline, we have continental shelf, but we don't have the technology. Only ancient times, same boats, same nets, वही यूज करके फिशिंग कर रहा है, कुछ भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. ये करो मत, वो करो मत. कैसे जिएगा फिशरमैन, कैसे जिएगा? हाउ देयर लाइवलीहुड्स विल बी इम्प्रूव्ड? आई रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफिशियल्स टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम एंड टू सी देयर लाइव्स आर better. Then as per the scientific information, there are 1200 species of fishes available, 580 species of crustaceans. It is a scientific fish diversity. We have identified 400 species of molluscan shells and 300 species of echinoderms, and crustaceans many more. Crustaceans means shrimps, lobsters and all. FSI, I'll come back to you. This is the EEZ of the country, 2.02 million square kilometers. Every country is having its own EEZ, which is bordered, given in the year 1976 to avoid international conflicts between the countries. So, in the year 1976, the EEZ was established. Within the zone, we are conducting fishing operations. We have a wide continental shelf of over 0.53 million tons. Marine fishery potential, every 10 years we estimate the potential. How much is there? How much is harvested? How much is there? There are certain apps developed earlier, statistical tools we used to make use of it to estimate the potential. Now we are going to estimate this year 2025, and now the marine fish production all over the country, it is hovering between 3.25 million tons to metric tons to 3.6 to 3.72 metric tons. It is hovering between. It is not. It is stagnant. It's not increasing, and that means we are maintaining the sustainability. These are the species available: mackerel, sardines, carangids, local names, kokari, everything they say. Pelagic trawl being operated, propagated, because demersal trawl is banned. Why? Because coral ecosystem will get disturbed. So the Department of Fisheries, Andaman administration, they are issuing the licenses, they are issuing the permissions for the operation of pelagic trawling, mid-water trawling.
the net won't touch the bottom. The fishes which are available in the mid-water column only will be caught. They move in groups. They can be caught. They move. They behave. They are shoaling behavior. Single species you can catch it. So that the ecosystem will not get disturbed. The entire ecosystem will be protected as per the Wildlife Protection Act. These are the tuna species commercially available in the world. Out of these 7 species, 3 species are occurring in Andaman waters, having good demand in overseas. One is yellowfin tuna, Tunas albicans, you can see there, and Tunas skipjack tuna, Catspannus pelamis, big eye tuna, Tunas obesus. Eye is big, third one. These are the, you can see these tuna species, the potential is available in Andaman waters, but sesame and canned fish, canned tuna fish preparation is required, for which if Ministry of Food Processing Industries coming forward with ICC and all, we can do together some kind of project in establishing sesame grade and canned tuna fishes. That is the processing technology. We have central institutes like NIFAT, National Institute of Fish Post Harvest Technology Training in Kerala, Cochin, CAFT, Central Institute of Fisheries Technology, FSI. FSI has to initiate the action for implementing the tuna cluster. We are going to conduct training programs for the fishermen. What is sesame grade tuna? How to can tuna? We are going to train them, and we are going to send them to mainland. This also I am requesting, if the Fishermen Association, Welfare Association President, please, Hemraj ji, thoda khada ho jaiye thoda. Welfare Association is looking after the Fishermen Welfare Association. If Welfare Association is approaching you, any training program, anything is there, if you can support, sponsor, even we can send them to abroad. Because Maldives is one of the pioneer countries, nearby, Thailand also we can send. Latest technologies we can introduce. Thank you very much. So even in mainland also other central institutes where I have already planned, checked out the program for 25, 26, 27, 27. Then awareness programs. What are the awareness programs? I request ICC to come forward. We are going to propagate the fishermen about they don't know what is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, what kind of funds are being given, what are the projects are going to be implemented. That we have to aware them. By ये मिलेगा, इसका इतना पैसा मिलेगा, इसका इतना percentage मिलेगा. Or UT scheme also there that can be implemented. That also nobody knows. Many people are not knowing. So likewise, whatever schemes are there, when we are organizing some kind of awareness programs, you also can join with us. Nabad madam is there. Earlier Archana Singh madam was there. We had associated with Nabad. Nabad also is coming forward to sponsor certain training programs in tuna long line technology, processing technology, as well as conducting awareness programs. NFDB is also coming forward to sponsor the programs. So FSI is taking the lead for providing training in association with other organizations. This is a tuna. You can see here oceanic tuna potential available 46,500 tons. But what we are catching? Current oceanic tuna harvest 4,420 tons only. How much is available? So we have to oceanic tuna harvest only 278 tons only. That means very meager, because we are not having technology. Whatever catch is coming, which is in the coastal waters only. Requirements to enhance the production. First, vessels are required with the state-of-art technology. Andaman MFRA Act 20-meter oval. I think Ishwar Rao, you are from Department of Fisheries. 20 meters overall length only being permitted to fish and give the license and registration. Up to 24 it can be given. Then if we are bringing these vessels in a phased manner, 50 vessels have been proposed to procure in a 5-year plan program. If we are procuring and making them to, and for that they are catching in deep sea. Immediately they cannot come down and give the catch and again go back like that. So mother vessels also proposed. 2 pilot vessels we are proposing to acquire from mainland to impart training besides FSI vessels. Even FSI vessels wherever is there all over India, we are going to send them for training so that they will be understanding the technology.
then they will harvest the resources. And mostly jetty facilities are not there. अभी फिशरमैन भाई लोग का बोट्स है, बाहर का इंजीनियर को लेता है, पैसा स्पेंड करके वो लोग रिपेयर करता है. मिनी ड्राइडॉक, जेटवेट साहब, इब्राहिम साहब, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए. एक मिनी ड्राइडॉकिंग फैसिलिटी के लिए, मिनी ड्राइडॉकिंग स्मॉल बोट्स, उसका रिपेयर करने के लिए किसी को बुला कर पैसा कर कितना स्पेंड करेगा वो लोग. ये भी वन ऑफ द एरियाज वी हैव टू थिंक अबाउट इट. मेन मिनी ड्राइडॉकिंग फैसिलिटी, स्मॉल बोट का रिपेयर आ गया, छोटा मोटर का रिपेयर आ गया, उसको सब्सिडाइज रेट्स में, मिनिमम रेट्स में, विच कैन बी अफोर्डेबल बाय द फिशरमैन. The earlier chief secretary has made me the chairman of the deep sea fishing policy committee, and I submitted the report. Same thing, all things have been projected. Afterwards, the former chief secretary has left. Things are pending. Processing plants, ice plants. Duly discussing with Maheshwar Rao ji, NFDB governing body member, Shahid Deep, Campbell Bay, Namkoveri, Nicobar, Hart Bay, Swaraj Deep, Diglipur. No processing plants at all. So these processing plants, with minimum required facilities, if you are providing, if coming together as Dr. Sahab bola tha, 20 people, 30 people, 50 people come together, establish a plant, they are also going to provide the opportunities. Cold chain facilities also may be upgraded. Very minimal. BR Seafoods, Nanda is there, and one monsoon fisheries is there. Only 2 processing plants. Ice plants. Ice मिलता नहीं. फिशरमैन को आइस रिक्वायर्ड आइस नहीं मिलता है तो भी ब्लैक में बेचता है. आइस प्लांट्स भी इसका स्कीम्स में आ सकता है. प्रोसेसिंग इज आल्सो वन ऑफ द, व्हेन आइस इज देयर इट कैन बी प्रिजर्व्ड. आइस भी वो अफोर्डेबल रेट में खरीदने के लिए, जिधर आइस प्लांट्स नहीं वो भी एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग कोशिश करना है. हम लोग डिस्कस करता है, कॉन्क्लेव बनाता है, लेకపోతే ऐसे सेमिनार्स बनाता है, डिस्कस करता है, मिनट्स बनाता है, वो हो गया बस काम खत्म. अल्टीमेटली देयर लाइव्स आर नॉट इम्प्रूव्ड. See, we are going to, I told you, we are going to train the fishermen of about 600 training fishermen, on-board training, maybe on mainland को भी थोड़ा sponsor कर दीजिए. 10 fishermen को ICC sponsoring, they'll get benefited, one certificate they'll be issued, and ICC also logo will be there. Through ICC we underwent training, you can sponsor the trainees. Then processing also, we are proposing and we are taking up with the Department of Fisheries. Then NABARD and NFDB has come forward. NABARD already issued the letter, consent they have given. They have been asked to prepare expenditure details and how many awareness programs, how many training process. From headquarters we have got the letter, madam. We are in the process of preparing and for benefiting the fishermen, imparting training program first of all. Next, training on hygienic handling and processing, post-harvest technology. 600 fishermen we are proposing, same fishermen, phased manner. In a 5-year span, we have to train all the people, and whatever tuna is there, we should see that Andaman brand tuna is going to abroad, overseas. And awareness camps, I told you, all modules, PMS5, APCA schemes, UT schemes, everything will aware them, will make application कैसा बनना है, किसी को मालूम नहीं. Sir, you are telling online में बढ़ सकता है, ऑनलाइन में किसी सब लोग fishermen are not educated, so we have to aware them. Then and there itself we have to make them to apply, get benefited. Scientific requirements के लिए we are going to identify the potential fishing zones. Already potential fishing zones were identified, but fish migrate from one area to other area. It is a continuous monitoring process. We are going to identify the potential fishing zones in Andaman Nicobar as well as EZ. Tuna research development, we are going to assess migratory patterns, biology, stock assessment, to understand fish availability, how much quantity is available, how the fish are migrating. Fish migration के लिए हम लोग project लिया था, फोटो दिखाएगा बाद में. Live fish को पकड़ के, tag लगा के, pop-up tag, they migrate, they release back to the sea, समुद्र में छोड़ देते हैं. They migrate somewhere. Whether it is migrating within our limits, they are migrating some other country limits. We have tracked, some fishes have gone to Thailand, some fishes have gone to Maldives, so other parts also. Andaman fishes, they have migrated to Indonesia. And whoever has caught that fish, informed that tag is available. The cash prize also given by, sponsored by NFDB. Next, monitoring potential is we are doing it. This is the tagging program which we have conducted in Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. Collecting the live fish,
fixing the tag, releasing back to the sea, and through satellite we are collecting the information, migratory pattern of the tuna. And we have various projects with Space Application Center, with remote sensing and GIS. We are identifying the potential through inquiries also, tuna availability, tuna grounds, potential fishing zones we are identifying. We are getting the imageries of sea surface temperature and chlorophyll. Based on that, we are identifying the potential availability of the tuna resources. This is a blue marlin available in Andaman. Within 2 months it is going to be deployed. It is going by this month end or first week of March, it is going to Calcutta. Once this is completed, we can train a number of fishermen. These are the boats which Maldives are operating. This type of boats can be brought at least subsidy under subsidy scheme. They can construct this type of boats. Fishermen can be encouraged to, even entrepreneurs can be encouraged to do so. This is the multi-filament tuna long-lining, monofilament tuna long-lining technology. This is a kind of different gear which is acquired from Japan. It's not Indian technology. It is successful technology. All over the world this is being followed. FSI is operating 4 vessels with this technology. This type of training program we are going to organize. This is the basket. One float line is there. The other float line is there. Beach में 5 hook branch lines are there. Hook is there. For catching बड़ा मछली पकड़ने के लिए छोटा मछली चारा डालना है ना, so we put the bait fish as sardines, squids. Their preferable fishes are shining natured fishes. They attract to that. This is the yellowfin tuna. This temperature to 18 to 28 नहीं है तो tuna नहीं रहेगा. Thermocline depth भी देखेगा तो thermocline depth टेम्परेचर एक जगह में ब्रेक हो जाता है, थर्मोक्लाइन हो जाता है, उसका बिलो डार्क जोन में मछली नहीं रहता है. सो वो टेम्परेचर भी देख के हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाला मीन्स फिशिंग गियर ऑपरेट करता है. दीज आर द स्पीशीज अवेलेबल इन इंडियन वाटर्स, बोथ ओशियनिक एंड कोस्टल वाटर्स. येलोफिन ट्यूना, tuna salvaceus, skipjack tuna, Catchpharis pelamis, big-eyed tuna, tuna sobesis, little tuna, Euthynis sapnis, long-tailed tuna, tuna stangol, frigate tuna, axis thajad, bullet tuna, axis rochi. These are the tuna available in Andaman waters. Both coastal, 3 are oceanic, I told you earlier. These are all things are available in Andaman waters. These are the sharks available in Andaman waters. Besides tuna, these are the big fishes, more than my length, more than human being length, more than 350 meters, 350 kilometers, 350 kilos, 250 kilos it weighs. Swordfish, Xiphias gladius, sailfish, Histopilus patripus, seerfish. एक टाइप ऑफ किंग फिश मिलता है उधर. एकांथोसाबियम सोलंड्री, ब्लैक मार्लिन मैकेरा मेजारा, ब्लू मार्लिन मैकेरा इंडिका, स्ट्राइप्ड मन, टेट्राप्लेक्स आर्डेक्स. These are the scientific names. So we are exporting almost 132 countries. India's seafood export is going to almost 132 countries, out of which our major item is frozen shrimp. Because of our now that Benami, our aquaculture item only, maximum of our export is almost 66% of our export is depends on the Benami, it is cultured items. And our major market is 5 major market. This one is USA, China, Japan, and Thailand and Vietnam. This is the major 5 market. It is contributing about 60% of our Indian export is going to this market only. In that, USA is contributing 34%. So USA market is our major market for Indian seafood export. If you compare to the world scenario, if you see 192 billion world export is our seafood product is exported, but our share is only 3.9% only our share. But India is aiming for 18 billion in 29-30s. Our government of India has fixed the target. Now recent budget announcement also they are focusing, because Andaman, Nicobar and Lakshadweep, this is the main island we can tap, and increasing the export. These 2 islands have to be potentially we have to tap. Then only we can be able to achieve the 18 billion target. So government is looking for most of the projects and developments has to be come in Andaman, then only we can be able to achieve this type of target. So you see, last 10 years our export growth, you see earlier in 10 years before 30,000 crores our export was. Now almost it is doubled, 60,000 crores we are exporting because of
What are now Indian entrepreneurs earlier, what they are doing, lot of this food processing industries is telling about the innovation. Already Indian seafood exporters are already adopted the technology. Now in mainland it is already we are doing the ready to eat and ready to eat products are export is going on, and based on the consumer preference, Nobasi line and Predator line and cooked shrimp line and analog product line, that automatic lines are come up and they are producing according to the consumer preference. So these products are already prepared from the mainland and the export is going on. Our value-added product is slowly picking up, but compared to Thailand and Vietnam and China, we are lagging. We are almost 64%, 23% is their export, but our is only value-added product, our export is only 12%. So these are the value-added product. Now presently our Indian exporters are exporting IPO products, cooked IPO shrimps and APC shrimps and Nobasi shrimps and pasteurization crab meat, surimi analog product, scoop drinks and skewer product. These are the products directly going to the consumer in the supermarket chain, in the consumer pack and the retail market. So these products is compared to earlier 10 years before, our exporters are sending headless form. It is reprocessing and exported to now our exporters are in mainland. They have already started to send the material to directly to the European market and the USA market. Directly it is going to the supermarket chain. Walmart and all the supermarket, Carrefour, all the Walmart, our Indian exporters are having tie-up and they are doing the export also. So now, in first of all, what happened, the infrastructure is not available in India, means in the Andaman. But now we can start about live chilled. This is because this Thailand, Malaysia, everything is near to Andaman. So, but the mainland now that the live chilled, all the items are is going from the mainland only. Our major item is live crab, live lobster, live clam, live aquarium fishes and all. Now it is going from our mainland Chennai airport and Calcutta airport, and chilled fish export like chilled grouper and chilled shrimps, chilled tuna and this. Actually, instead of focusing on the processing sector, first we can try to do chilled and like it is very easy. That no need of more processing infrastructure is not required. Only harvesting method we have to improve and infrastructure we have to improve. It is a easy method. We can take from Andaman and we can easily take we can increase the revenue from the Andaman. It will benefit to our fishermen and farmers in like instead of frozen shrimp, if you are exporting chilled shrimps directly, it's fetching almost $10. When you are doing the frozen, it will be only $7 only. So chilled shrimps is getting more value than frozen shrimps. So Andaman is the unique nature. We can exploit the opportunities of this live and chilled items first. Andaman now only one registered exporter is only Andaman. That exporter is sending the frozen material through Chennai airport, Chennai seaport only. Almost now that is 3.44 crores last year exports. But mainly what are mackerel and snapper, grouper and reef fishes, mud crab, lobsters, all the items are available. Whatever items available in the mainland, the same thing is available in Andaman also. A monthly 400 metric tons is traded through the mainland to Andaman material, but it is not in the export value of Andaman. It is coming to mainland. So this is infrastructure. You see, compared to the infrastructure, if you see the mainland, we have almost 640 processing plants are there. But in Andaman only 4. But out of 4, only 1 is registered. So there is no registered regulatory INVIDA and EA approved unit is needed for the export. But only hardly one unit only available in Andaman. So the potential species, if you see already, this species why I want to focus. These are the species is international market that I will come to the analysis. So tuna species, reef cod species, crest lobster and cephalopods and ornamental seaweed. These all the items are potential items in the international market. The same item is available in Andaman. I tell about the potential of global market. These 6 items global market trade is almost 146 lakh metric tons of the material is globally imported, but 63 billion US dollar trade is going on.
So this potential is available. This one in billion out of 192 billion, 63 billion dollar export is potential is in the world market. These species are available. And world trade, if you suppose Indian trade and Andaman, in mainland we have 12 lakh metric tons of these items and 3 lakh metric tons we are exporting, 25% only we are capturing. But Andaman, almost 2 lakh 50,000 metric tons of this tuna, reef fishes, crustacean and suppose food and all items are available. But we are only sending 4,400. Morning, Madam Director Madam has told that 4,400 quantity only traded through the mega. Most of the 80% of the items are consumed in the locally. But it is not out of 2 lakh 43,000, only 48,000 only we are capturing. Remaining is unexploited. There are lot of scope is there to increase our export and tap the potentials. We are only presently Andaman, we are utilizing only 1% of the potentials. So the caps already identified, each alliance, no infrastructure, no on-board prison, everybody knows. So we got to take. What MPDA has taken the initiative to promote the Andaman. We have already 5 years before, we have prepared a strategy plan and already given to the Department of Fisheries what are the infrastructure caps, what need to be done, what are things that strategy of done. We are working on that, we are continuously having meeting with them, but it has to be improved in the fast manner. And also aquaculture side also, our RGC, MPDA RGCA has given the action plan for the production of aquaculture items. And we have facilitated here, there is one reporting system. Thailand administration, they told that Indian vessel can directly go to the Thailand for delivering the fish. So for which some policy paper work has to be done. If that formalities has been completed, our fishing vessel can directly unload the fishes in there. So it will be as a chilled condition you can export, and customs policies and government parented policies, the regulation we have to meet out. So there are opportunities now that airlines also, Malaysian Airlines has been started. Either you can ship through the air or you can directly take the ship and you can unload. There are the procedure has to follow, the procedure has to be completed very fast manner. And the MPDA has facilitated with the Embassy of India, Thailand, the Embassy of India, Japan, and we have conducted the meetings and we have facilitated for promotion of the export also. So what is the measure to be taken in the all the things mother vessel concept already told, because this simple method, one on-board freezing vessel is there, the land-based infrastructure can be reduced. Land-based infrastructure will take time, but already there are 2 or 3 entrepreneurs having the on-board freezing vessel. Pilot run you can run and study the feasibility. What is the economic feasibility? Whether the operating the on-board freezing vessel, whether it is worth economically feasibility. It will help. That study has to be conducted before implementing the number of vessels. 1 or 2 pilot vessels can be run, and the study has to be conducted. Then aquaculture side also, catch cultures has to be promoted in proper manner. And processing, there is no process chilled fish handling center. Now airline has been started, but there is no approved handling center. So tomorrow we have the meeting with the Department of Fisheries to find out the common, whether establishing the common pre-processing facilities, whether we can be able to export chilled and live. That and all, we have the meeting with the Fisheries Department. The MPDA will facilitate the technical support and registration procedure and all we will support. So CFTRA का मेजर एक्टिविटी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है. हमारा मेजर मैंडेट है लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू सूट द इंडियन फूड इंडस्ट्री. वो 1950 में जब हम एस्टैब्लिश हुए थे तभी ये मैंडेट था, एनवायरमेंटल फ्रेंडली और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, सो दैट इंडियन फार्मर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री कैन बी बेनिफिटेड. सो तब अब तक 700 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज फूड प्रोसेसिंग के लिए 700 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हैं. इसमें 450 अभी वेरी एक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं. इसी अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टिंग के बारे में सुबह बात किए थे. सो CFTRA इज वन ऑफ द रेफरल लैबोरेटरीज ऑफ द कंट्री एंड मोर देन 200 टेस्टिंग मेथड्स आर एस्टैब्लिश्ड है. फूड टेस्टिंग के लिए कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए तो CFTRA आप एप्रोच कर सकते हैं. और एक मेजर जगह है हमारा कंट्रीब्यूशन है HRD और स्किल डेवलपमेंट. ट्रेनिंग की ज़रूरत है बहुत सारे जगह पे. अवेयरनेस के बारे में अभी
बात कर रहे थे, अवेयरनेस क्रिएशन इज वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट, स्किल डेवलपमेंट इज द करंट रिक्वायरमेंट। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोई भी एरिया में अगर स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो CFTRI सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा रेगुलर कोर्सेज भी है और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज बोलते हैं, 1 हफ्ते का कोर्स, 2 हफ्ते का कोर्स हम स्पेसिफिक एरियाज में कंडक्ट करते हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो CFTRI में अप्रोच कर सकते हैं। अगर फिश के ऊपर और अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग चाहिए तो हमारा इंस्टीट्यूट इसके लिए सपोर्ट कर सकता है। और हमारा स्टार्टअप के लिए अभी बहुत सारे सपोर्ट हम दे रहे हैं। ऑलरेडी 19 स्टार्टअप्स कंप्लीटेड ग्रेजुएटेड फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड देयर आर अनदर 10 गोइंग ऑन। कोई न्यू एंट्रेंट वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन टू स्टार्ट इट एज अ स्टार्टअप, सो CFTRI गिव्स लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दैट। न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम है बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, बहुत सारे हमारा प्रोग्राम्स है। वो देश के सभी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ हम काम कर रहे हैं। और सोसाइटल बेनिफिट प्रोग्राम्स, MSME स्पेसिफिकली फॉर APOs, MSMEs एंड फार्मर्स। सुबह से हम PMFME स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। So CFTRI is one of the nodal agencies for implementation of PMFME in Karnataka state, and we are also the mentoring institute for many of the other state CICs, common incubation centers that are being set up under PMFME. So बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है 1950 से अभी तक हमने क्या किया, इसके बारे में अभी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि जो भी फूड एंड फूड साइंस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन है वो CFTRI से हुआ है। दीज आर दी स्पेक्ट्रम, कोई भी एरिया देखिए, बेकरी देखिए, बेवरेज, सीरियल प्रोडक्ट्स, फूड मशीनरी, हर जगह में हमारा टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी का डिटेल हमारा वेबसाइट में मिलता है। अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उसमें दिए हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम CFTRI। तो ये इसके अलावा हमारा वेबसाइट में हमने फ्री टेक्नोलॉजी भी लगाया है। ये टेक्नोलॉजी वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है। हमने पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारा वेबसाइट में मिलता है। तो आप डाउनलोड करके और टेक्नोलॉजी को विदाउट एनी पेमेंट आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बेकरी में बहुत सारे प्रोडक्ट है और राइस मिक्स और सीरियल के ऊपर, स्पाइसेस के ऊपर है। अभी तक देख सकते हैं कि 68,388 डाउनलोड्स हुआ है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो आप CFTRI में कांटेक्ट करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी ले सकते हैं। अभी फ्यूचर क्या है, अभी फ्यूचर अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, क्या क्या एरिया उनको देखना पड़ता है, क्योंकि ये फूड इंडस्ट्री का डिमांड अभी मार्केट चेंजिंग वेरी फास्ट। सो टू मीट द डिमांड्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री and also to take care of the cost factor and the quality factor, because they are the ones which decide whether you are able to sustain in the market or not. And also environmental के बारे में बहुत सारे चीज़ें बात कर रहे हैं, sustainable processes के बारे में और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में। जो भी ये नया उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, ये सब एस्पेक्ट को थोड़ा देख के आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपके लिए सपोर्ट चाहिए तो CFTRI भी दे सकती है। मेरा आज का टॉक मैंने जो अंडमान रीजन में जो कमोडिटीज मिलता है, ग्रोन, आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। सो दिस आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज द कोकोनट, पैडी, बनाना, ऑल दोस थिंग्स यू नो अबाउट दिस। तो एक कुछ सिंपल टेक्नोलॉजी मैंने इधर लगाया है। फ्रूट एंड वेजिटेबल का जनरली क्या करते हैं, इसको ऐसे ही सेल करते हैं। इसका एक मिनिमली प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है CFTRI के पास। इसमें मिनिमल इंटरवेंशन करके इसको काट के इसको वॉश करके पैक करके एक कंडीशन में रखना है। ऐसा रखेंगे तो इसका शेल्फ लाइफ 2 to 3 टाइम्स और समटाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको करने से आगे अगर ये फार्मर के लेवल ये करेंगे तो इसका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा और फार्मर भी बेनिफिट हो जाएगा। ये सिंपल एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी हमने बिग बास्केट, आप सबने सुना होगा बिग बास्केट में ये टेक्नोलॉजी के यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड एज CFTRI Nutrilog. So their turnover is more than 100 crore now. It's a simple technology. Anybody can take this technology and start working on this. Depending on what is available in this region, this technology can be adapted.
अभी न्यूअर जनरेशन का प्रोडक्ट जो फूड habits have changed. People want to eat pasta, Maggi, noodles and all. So it is very difficult to control the children from not eating them. उसको कैसे healthy बना सकते हैं? So you add vegetable to that, add nutrient to that. So that is how we need to look at the newer products in the market. So we cannot completely take out the product, but how we can make it more nutrient. So एक एग्जाम्पल है वेजिटेबल पास्ता. सो वेजिटेबल को पास्ता में डाल के आप देंगे, बच्चे खाएंगे तो भी उनको भी न्यूट्रिएंट मिलेगा. सो वी नॉर्मली वी से डोंट ईट दैट, डोंट ईट दिस अ जंक प्रोडक्ट. सो हाउ वी कैन मेक इट मोर न्यूट्रिएंट, दैट इज अ न्यू चैलेंज नाउ. एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम की वजह से मैं एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ. कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. एक ड्राइंग के बारे में भी सुबह बताया. सो जनरली उसको ड्राई करके रखेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा. सो ड्राइंग का क्या होता है, सोलर ड्राइंग जाएंगे तो उसका टाइम ज़्यादा लगता है और अदर इश्यूज आर देयर, कंटामिनेशन एंड अदर्स. नया न्यू एज ड्रायर्स वी टॉक अबाउट मैकेनिकल ड्रायर्स, बट व्हाट हैपेंस इज एनर्जी कंजम्पशन इज वेरी हाई, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल. सो अभी न्यू एज ड्रायर्स आ रहा है, 4D वी कॉल इट एज 4D और 4G ड्रायर्स. तो वहाँ पे आपका एनर्जी कंजम्पशन भी कम है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आ जाएगा. सो वी हैव मेनी टेक्नोलॉजीज ऑन दिस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ऑफ दी प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल हियर. सो एक सिंपल टेक्नोलॉजी है ऑस्मोटिक हेयर ड्रायर. अगर जैक फ्रूट है और कोई अदर फ्रूट है, इसको ड्राई करने के लिए यू नीड नॉट हीट इट, यू कैन यूज द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन through which you will be able to remove water and you can retain the color and texture without affecting the quality. So banana, I think one of the major commodities grown here. बनाना के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. मैंने इधर दिया है, बनाना पाउडर भी कर सकते हैं, जूस है, बनाना पाउडर एडेड, मेनी अदर प्रोडक्ट्स कैन बी मेड. वन एग्जांपल आई वांट टू गिव, thanks to the PMFME scheme, one of the beneficiaries, he is the second beneficiary of in the country. He is from Mysore. He has undergone training in CFTRI and then started the banana powder, Pakahu banana powder. Now he is selling it through e-commerce, and then he is a O&M agent for our common incubation center. He is producing the banana powder and he is making many value added products. बनाना पाउडर का एडवांटेज है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. तो आप उसको आटा के, चपाती का, व्हीट फ्लावर के मिला सकते हैं और कोई भी फ्लावर से इसको मिला के इसका GI वैल्यू कम करवा सकते हैं. सो इसलिए ही इज गेटिंग वेरी गुड मार्केट इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट. तो ये सिंपल है, बनाना को ड्राई करके उसको पाउडर बना के बेचना है. So a simple technology, but very good market, and it is going to be the future because nowadays everybody is talking about health. वो GI ग्लाइसेमिक डायबिटीज के बारे में जो लोग बात करते हैं, लो ग्लाइसेमिक खाना है. तो इस जगह ये बहुत सारे एप्लीकेशन में मैंने इधर दिया है. तो इसके अलावा खाली बनाना के साथ अभी तो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं. जो भी कोई भी वेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए. जो भी वेस्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं. बनाना फाइबर से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. CSIR लैबोरेटरी है, हमारा सिस्टर लैब्स है बहुत सारे. तो बनाना वेस्ट के उसको कैसे फाइबर बना सकता है, फाइबर से कैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो भी है. और बनाना स्टेम से आप जूस भी निकाल सकते हैं, वो भी एक एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ. ऐसा बहुत सारी चीजें बनाना बेस्ड प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं. कोकोनट के बारे में बहुत सारे बातें हुई. कोकोनट का ऑयल हमको पता है, लेकिन अभी वर्जिन कोकोनट का ऑयल बहुत सारे डिमांड है. CFTRI का टेक्नोलॉजी है, वो CDP के साथ मिला के टेक्नोलॉजी डेवलप किया है. मोर देन 80 कंपनीज वी हैव गिवन दैट टेक्नोलॉजी एंड इट इज शोन दैट CFTRI का जो टेक्नोलॉजी से वर्जिन कोकोनट ऑयल बना है, वो बाकी जो मार्केट में मिलता है इससे बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ दी क्वालिटी. तो कोई भी इसके अलावा डिसिकल्टेड कोकोनट है, कोकोनट स्प्रेड है, कोकोनट पाउडर है और कोकोनट का प्रोटीन एक्सट्रैक्शन है. बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है. तो आपको डिसाइड करना है कि विच प्रोडक्ट यू आर टारगेटिंग बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड एंड अदर थिंग्स. टेक्नोलॉजी सपोर्ट जो भी है हम दे सकते हैं. नीरा दैट इज द कोकोनट सैप है, इसको रखना ज़्यादा आवर्स नहीं रख सकते, वो फर्मेंट हो जाता है, इसे अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है और उसको, लेकिन ये बहुत हेल्दी है. इसको कैसे आप प्रिजर्व करके बॉटल में रख सकते हैं, 3 महीने इसको रख सकते हैं. इसका टेक्नोलॉजी भी हमने केरला का एक कंपनी को दिया है
2 months to 3 months shelf life can add without getting the product fermented. फिश के ऊपर तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, हमारा एक डिवीजन में वो फिश के ऊपर काम करता है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी है, वेपर से लेकर सॉसेजेस, पिकल एंड फ्राई, पाउडर्स, स्पाइस, थोड़ा स्पाइस भी इधर ग्रो होता है। स्पाइस के ऊपर बहुत सारे टेक्नोलॉजी का एक बास्केट भी है हमारे पास, पेपर के लिए भी है और जिंजर के लिए भी है, टर्मरिक के लिए भी है। उसको पाउडर बनाना, स्पाइस मिक्सर्स बना सकते हैं। एक सिंपल टेक्नोलॉजी मैं बताना चाहता हूँ। नॉर्मली ये टर्मरिक को क्या करते हैं, उसको बॉईल करके उसको सुखा के देन उसको पाउडर बनाता है। ये लगता है ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज। हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, एक दिन में इसको कर सकते हैं विदाउट एडिंग मच कॉस्ट टू द प्रोसेस, बिकॉज कॉस्ट इज ऑलवेज है क्राइटेरिया। सो ये टेक्नोलॉजी है, एक दिन में ये पाउडर बना सकता है। ये बेटर क्वालिटी का कर्क्यूमिन कंटेंट जो बोलते हैं इसका, इसमें ज़्यादा है। तो मिलेट के बारे में सुबह बताया। मिलेट अभी 2023 वाज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। CFTRI में 50 टेक्नोलॉजीज है जो मिलेट को यूज करके आप वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी मार्केट जो जब जा रहा है वो कन्वीनियंस मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ऐसा प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है। सो इसको लेके बहुत सारे हमने प्रोडक्ट बनाया, इंस्टेंट उपमा मिक्स, और ऑल आर बेस्ड ऑन द मिलेट्स, डिफरेंट मिलेट्स। कलर और फ्लावर्स, आई थिंक फ्लावर के बारे में बताया सुबह, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करना है। सो वी दो इट इज नॉट डायरेक्टली एज अ फूड, so recently we have developed a technology, paper based freshness keeper, which can increase the shelf life of rose by 2 to 3 fold. So it helps the export market, so that because the shelf life is extended. It's a very simple technology. You keep a paper freshness keeper that is developed by CFTR. I say जो भी flowers इधर मिलता है, same technology we can extend to other flowers also, so that the export market can be had. Apart from that, the colorant, because जो भी जो वेस्ट आता है, अगर कोई फ्लावर यूज नहीं किए उसको वेस्ट हो गया, so whether we can extract some color, because natural colorants are nowadays more preferred than any synthetic colorant. So we can extract the color and that color can be used in the food preparation. कैशोनट भी अगर ज़्यादा है, कैशोनट के ऊपर भी हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट है। हमने टेक्नोलॉजी का केरला स्टेट कैशो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दिए हैं। मोर देन 7-8 टेक्नोलॉजीज आर डिफरेंट कोटेड कैशोस। और अभी नया ये न्यू एज है हेल्थ एंड वेलनेस का और कन्वीनियंस का। सो जो भी हेल्थ एंड वेलनेस का बास्केट में सूट हो रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा जाता है। सो इसलिए जो भी नया इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, सो वी कैन लुक इनटू दीज एरियाज, बिकॉज this will be some maybe a niche area at this stage, maybe in future it is going to be the need of the hour. So convenience food के बारे में अभी थोड़ी पहले मैंने बताया। So various products can be made with the CFTRI technology, because that is going to be the order of the day in future. So we are there to support. This is waste from wealth. Any waste that is coming out from food industry, now the regulation itself is there that you are not supposed to leave the water out, you are not supposed to throw the solid waste out. So इसको कैसे use करेंगे? So you have to convert that into some form where it can be used. So biodegradable plate के बारे में सबको पता है. But it was done in CFTRI in 1980s. So you can see the stamp released by the government of India with the CSIR logo and CFTRI technology. So now it has become so popular. That is made from the arecanut leaves. So I think arecanut is grown in this area. So same thing can be adopted today. That is also a simple technology. Even at the rural level, it can be employed. And now, whether it is rice waste or cereal waste or millet waste, that is also that is coming out. Need not go as waste. It can be converted into even edible cutlery. वो आप खाना भी खा सकते हैं, कटलरी भी खा सकते हैं, स्पून भी खा सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी आने अभी शुरू हो गया। एंड वन ऑफ आवर लैबोरेटरीज, CSIR लैबोरेटरीज इज मेकिंग लेदर जैसा मटेरियल, आर्टिफिशियल लेदर यूजिंग दी बायो वेस्ट। तो दिस इज हाउ द न्यू ट्रेंड इज। हमने रिसेंटली मोबाइल फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। दिस इज बिकम वेरी पॉपुलर। आप
मटेरियल को फैक्ट्री लाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री को सीधा फील्ड में लेके जाइए, वहाँ पे उसको प्रोसेस कीजिए, उसको एटलीस्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के उसको बाद में इसको फैक्ट्री में लेके जाइए। इससे बहुत सारे एडवांटेज होता है। दिस यूनिट व्हाट वी हैव मेड इज अ वेरी वर्सेटाइल यूनिट। आप टोमेटो भी प्रोसेस कर सकते हैं, सीरियल भी प्रोसेस, लाइन इक्विपमेंट को चेंज कर सकते हैं। अभी इसको देखने के बाद अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए हम एक बना रहे हैं, सिमिलरली फॉर स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट वी आर मेकिंग, सो वी कैन थिंक ऑफ समथिंग टू दिस रीजन आल्सो। इट विल बी वेरी कन्वीनियंट, यू कैन टेक द यूनिट डायरेक्टली टू द फील्ड। So with this I will conclude my talk. Low cost technology doesn't mean that it is quality में low है. We have to keep the quality high. Cost effectiveness we need to bring in. Something innovative should be there. That is what market is looking for now. So I think when new entrants have to focus in this area, and regulatory requirement के बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए. So CFTRI is there to support in any of these aspects. Thank you very much for giving this opportunity. I would like to thank the organizer for inviting CFTRA for this wonderful program, and we are always there to support you. Thank you.